Good afternoon everyone. Dear student, in previous video we already discussed first water purification technique. Let's see the second water purification technique which is electrodialysis process. तो क्या होता है electrodialysis process? So name itself indicate that electro in presence of electric current, whatever the cations and anions which makes water hard can be removed in presence of electrode said to be cathode and anode and in presence of ion selective membrane electrode, that is nothing but the electrodialysis process. क्या होता है electrodialysis में? पानी के अंदर जो आयन्स है, कटायंस एंड एनायंस की जो पानी को हार्डनेस क्रिएट करते हैं उनको हमें रिमूव करना है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस. तो कैसे होती है इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस? चलो देखते हैं डायग्राम. सो इस डायग्राम में कंपार्टमेंट है. इस कंपार्टमेंट के अंदर कैथोड एंड एनोड इसको कॉर्नर में फिट किया है. देन कैथोड के नजदीक कटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन फिक्स किए, एनोड के नजदीक एनायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन फिक्स की है. And there is a alternate adjustment of cation selective membrane, anion selective membrane inside the container. What is the actual process? तो देखो एक्चुअल प्रोसेस क्या है. हमने हार्ड वाटर ऊपर से कंपार्टमेंट के अंदर डाला. सो हार्ड वाटर के अंदर जो पॉजिटिव आयंस है एंड नेगेटिव आयंस है वो हमें करने हैं सेपरेट, कि जो पानी को करते हैं हार्ड. So how we are going to separate this? So simple thing आपको ध्यान में रखना है कि पानी के अंदर जो कटायन है वो कटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन थ्रू कैथोड के तरफ माइग्रेट हो गए, वेयर एज एनायंस की जो पानी को हार्डनेस क्रिएट करते हैं वो एनायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन थ्रू एनोड के तरफ माइग्रेट होने वाले हैं. दैट इज सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर electrodialysis process. So principle said that cations migrated toward cathode through cation selective membrane, whereas anion migrated toward anode through anion selective membrane electrode. So ये जो cation selective membrane ये है ना वो sensitive to Nr3+ आयंस की तरफ है, इससे प्रिपेयर की गई है. whereas anion selective membrane electrode it is made up for SO3 minus sulfate and carbonate COO minus. तो जब ये हार्ड वाटर अंदर जाएगा तो पॉजिटिव आयंस दे आर माइग्रेटेड टूवर्ड कटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन टूवर्ड द कैथोड, बिकॉज पॉजिटिव आयंस दे आर माइग्रेटेड टूवर्ड द कैथोड, वेयर एज anions present in the water they are migrated toward the anode through anion selective membrane electrode. तो देखो आफ्टर देयर सेपरेशन देयर आर टू आउटलेट. दिस आउटलेट रिप्रेजेंट दिस इज फॉर प्योर वाटर. थ्रू दिस आउटलेट वी कैन रिमूव द प्योर वाटर, वेयर एज फ्रॉम दिस आउटलेट देर इज अ positive ions and negative ions. There is a aggregation of these ions. So these ions they are removed from the outlet which is said to be the saline water outlet. So this is said to be the diagrammatic representation as well as the principle of electrodialysis process. Okay, now let's see what type of advantages of that. What is the limitations and application for electrodialysis process? क्या क्या advantages है? पहला, whatever the expense for this electrodialysis is very low, so it is a less expensive. Whatever the equipment we are using, it is a compact equipment, it requires the less space. What are the limitations? Firstly, we are using the membrane, cation selective and anion selective, it requires the periodic maintenance. And second, if our water contain the silica, we cannot be separate such a silica from our hard water. There are few applications. First, we can convert the sea water into drinking water. And second, there is a re-demineralization of water inside the boiler feed water. So these are said to be the application for electrodialysis process. In your SPPU end sem exam, there is a one question. What is electrodialysis? Explain the electrodialysis process with the help of diagram. Write it's a 4
advantages, disadvantages and applications. So thank you everyone.